me share my screen, entire screen, share. So let's start the very basic class. Okay, yesterday we did backtracking and today we are going to start set and hash tags, basically sets, and then we are going to do something else. So yeah, let's start. So before starting set, right, let's talk about a different data structure that is specific to C++. You can implement same thing in your own, right, in JavaScript, in Java, JavaScript, Python, anything else too. So there is a STL object or STL, there is an STL class of pair. So this is a STL container of pair. So it has two values. Whenever you write pair, it has two values, value 1 and value 2. Means it's like, let's say you are having an array of size 2, as simple as that. But in array, you are going to store same elements like integer, double, character, so on. So data type of both the elements will be same. But suppose you want to store two elements, but their data type can be different. Suppose you want to store in that way. So there comes the pair. So in STL, we are having a pair. We define it like pair, and then curly braces, and then data type of both the values. So suppose I want first to be as integer, second to be as character, let's say. In this way I can define, as simple as that. How do I? So it is actually just two elements, 3 comma d, let's say. First element is integer, second element is character. And let's say I want to access the first element. So p dot first, you will be able to access the first element. P dot second, you will be able to access second element, character. That's it. Pair is an basically pair is a data structure having only two elements, and you can define both the element data type here. Let's code it here in our VS Code. If we code it here, so let's code it here. Pair int comma character p, a character comma p. So this is a pair, as simple as that. So if I want to assign, I can assign p dot first will be the first value. First is integer, so I will write p dot first is equal to 5. P dot second is equal to, let's say it's a character, so I will write, let's say e, or something else, let's say z, let's say question mark, anything. So in this way you can make a pair. Suppose you want to make a pair of an array. Let's say you want to make an array. Let's say you want to make an array such that each element stores two things. One is what you say, roll number of a student. Second is name of a student. So roll number is integer, name is string. So each element is actually a pair. So each element is actually a pair of, first is integer, so integer. Second is string, so comma string. As simple as that. And you want to make an array. So I want to make an array of students where each element is a pair and there are n students. So let's say I want to make a pair. So pair int comma string comma students. So I made a pair. I made an array of pair named as student where where each element is actually a pair of roll number comma name. As simple as that. In this way you can make a, what do you say? In this way you can make a pair of, an array of pair basically. You can make integer comma integer, you can make an integer comma string, anything, it is up to you. You can have any two different data type here. But this is specific to C++. How would you do for Java, Python, anything else? So you all guys would be knowing about struct, right? Classes, structures and all. So we are having struct, that is structure.
So in this way structure you can make a structure. Let's say I make a structure pair. So my first my it will have two data types. One is integer, second is string. In this way I made myself struct pair independent. Let's say pair, my pair, and this will have first element as integer, second element as a string. So you can make in this way also. So my pair p2. So p dot first is equal to integer, p dot second is equal to uh, let's say Abhishek. It is p2 not p. As simple as that. In this way you can also make what you say. In this also you can make a pair. So it is up to you. In C++, you are having an STL container automatically. You don't have to make any structure. But in other language, you can make your own data structure, and you can have the values in this way. And suppose you want to make an array. So my pair array of students of size let's say 6, and I want to take input. So I will take input in this way, where each student I is in a pair of integer comma string. So I can do C in students I dot first, students I dot second. As simple as that. So this was just I was just introducing you to how you can make your own data structure. Right? In this way you can make your own data structure. So I hope you are clear with this. I hope you are clear with this pair thing. Everyone is clear with this pair thing, right? Right. I guess no one is having any doubt in this. And now the main question would be, okay, suppose if I sort it, if I let's say I am having an array of pairs or something else. Let's say I am having a vector of vector. Let's say pair. I am having an array of pair, right? Where each element is a pair. 3 comma 5, 2 comma 6, 2 comma 4, 4 comma 9, 5 comma 0, and 1 comma 18. Let's say I'm having a array where each element is a pair. Now let me ask you a question. You are having an array where each element is a pair. Now suppose I sort this array. Can you tell me what would be the final ordering? What would be the final array if I sort this? Anyone? What would be the final array if I sort this? If I call my sorting function, what will be the final array? Guess it? Okay, like here both the first element are same, then what would happen? Exactly. So whenever you are having an array or vector or anything and you sort it, so how does sorting behave? In actual it is sorted according to first element. First it will sort it on the basis of first element. Let's say these two elements has the same first element, 2 and 2. If two elements are having same element, then it will sort it on the basis of second element. Here, second element is 6, here second element is 4. So which one is smaller, that will come first. So the final array would look like first the smallest element. The smallest element is 1 comma 18 because it has a smallest first element. So I will have 1 comma 18. Next smallest first element is 2, but we are having two twos. If we are having same number, same first element, then we will compare second element. Which one is smaller second element? This one is smaller second element. So it will go like this. Now let's go to third element. Now third is this one, 3 comma 5. Then I guess fourth one is this one, 4 comma 9. And last would be 5 comma 0. If you notice, this is the smallest second element, but still it is in the last. Why it is in the last?
because the first element here is the largest. So whenever you sort, sorting happens on the basis of first element. If first element is same, then it will happen on the basis of second element. Let's say you are making a triplet. You are not having two elements. You are having three elements. Let's say 3, 5, comma 2. Let's say 3, comma 5, comma 9. Now what will happen? Suppose your each element is a triplet, not pair. Then what will happen? Your first two elements are same. Then it will go to second element. Let's say third element to compare. So this is how sorting behaves. First you compare by first element. If first element is same, then you compare by second element. If second element is same, then you compare by third element. So on, so on, so on. I hope you guys are clear with the pair. You guys are clear with the data structure. ओके. किसी को इसमें डाउट है कुछ भी पूछ लो अभी. किसी को कुछ भी डाउट है इसके अंदर. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू. अभी वापस क्लास का टॉपिक पे आते हैं. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझा रहा था इसलिए समझा दिया. लेट्स नाउ स्टार्ट our main topic, that is called as set. Now you guys tell me, what do you understand by set? What do you understand by set? बचपन में पढ़े होगे राइट. 9th and 10th you would have studied about set. Venn diagram I guess तुम लोग पढ़े होगे. A union B, A intersection B. These things I guess you guys would have studied, right? I want the same reasoning here. जो तुम पढ़े हो वही एक्चुअली. बट तुम लोग बताओ, what do you understand by this set? अगर तुम्हें बोले कि you are having a set, so then what you will understand by that word कि I am having set? What do you understand by that thing? Come on guys. No one. Set of an element is called. Anything else? You want to add on something here? Ordering, right? Okay. Hmm. So I guess when you, let's say I'm having a set of natural numbers. So when natural numbers, so you would have studied about this in the intent. So set of natural numbers are actually set of these numbers where each element is only once. Let's say set of, let's say I'm having a set, any set, let's say set A. If you'll notice here, you are having a set. The any element or any data, any, let's say anything, will be called set only if all the elements are distinct. Here all the elements are distinct. See, and they are in ascending order. So this will be called as set. So this container where the values are, this will be called as set. So now we got to know something about set. Ki set is actually container or data structure of distinct element. It is a data structure of distinct element. Second thing, it is in ascending order. Is in ascending order. These two things should be clear. Now, how do we implement set? Like we know arrays, we know vector, we know normal data types, integer, character, now. But from here we got to know that set is also data structure like arrays. Arrays was a normal linear data structure having each element at index 0, 1, 2, 3, 4. But how actually set is going to be? So set you can understand as a linear data structure also. Right? Set you can understand as a linear data structure, same as arrays. So let's say I'm having a set. Let's say I'm having a set of integers. So you are having a set A of integers. It means that this this A as a container will contain only integers. Like A can be 169. This is a valid A. A can be 12.
18, 35. This is a valid A. But if I write A, 12, 1, 2, 5, 5, 9. This is not set because I'm having two fives. So set always stores distinct element. So if you are having two five, but still in the set you will be only having one five. Now I don't want to explain it in theory because theory से समझ में नहीं आएगा. Let's go with the practical coding part only directly क्योंकि वहाँ से ज़्यादा understanding मिलेगी तुम्हें को. Okay, set is already defined in your languages. C++ में STL provide करता है. JavaScript also has an STL container. So यहाँ पे आते हैं set बनाते हैं directly. Okay, मैंने एक set बनाया. I made a set here. A. This set contains only integers. As simple as that. देख लो भाई हमने यहाँ Now, let's say I want to insert elements 3, 5, 12 in this set. So I can insert it in this way. A dot insert 3. A dot insert 5. A dot insert 12. Let's say I insert 5 again by mistake. A dot insert 5. I inserted 5 again. You have inserted 5 two times, but as A is a set, so A will contain each element only once. So you will have 3, 5, 12. You won't be having 5 twice because A is a set. Okay. For example, let's print this set. For auto V, let's print this. I'm one second guys. भाई तेरा मोमेंट का आवाज आ रहा क्लास में वो दिक्कत था मुझे. हाँ मत बोलो भी कुछ. Sorry. Let's say if to prove you that the set only have a distinct integers, do not worry about this. What I'm writing, you can just understand that this is a way of printing set or accessing element in the set. Let's print the set and let's see what we see here. Let me run this command. Let me run this code, and if I see, see 3, 5, and 12. Let's insert some more element. A dot insert 2. A dot insert 18. A dot insert 9. If you notice, I've inserted the elements in set in different order. They are not in ascending order. But still, in my set, I will have all element only once and that too in ascending order. Set will automatically manage. First I inserted 3, then 5, then 12, then 5 again, then 2. See, I've inserted 2 here. 2 is the smallest element. 2 should be first. Right? 2 should be inserted first. But I'm not inserting 2 as the first element. But still, in my final set, I will be having 2 as my first element. Let's run this code. Uh, I made a mistake here. A dot insert 2. A is not a name type. A should be a name type. Yeah? See. I inserted 2 somewhere in the last, but still it is in the starting of the set. Similarly, I inserted 9 here in the last, but still 9 is at correct position. But still 9 is at correct position. Similarly, 2, 3, 5, 9, 12, 18. All of them are in ascending order. But I have not inserted these elements in the ascending order. So this is speciality of set. In set you can store elements in any order, but in the set elements would be stored in ascending order only. And each element will be stored only once. I've inserted 5 two times, but 5 is here only once. If I insert 9 again, still 9 will be here only once. Okay. This set, where each element is in ascending order, is called as ordered set. The set we made here is called as an ordered set. That it will store all the elements in ascending order only, specific order only. Now,
Let's try to understand. Let's say I am having a set. It does not have any element. So I insert 3 here. So I will have 3 here. If I insert 5 here, so I will be having 3 comma 5. If I insert 5 again, still I will be having 3 comma 5. If I insert 2, I will be having 2 comma 3 comma 5 in this order. Now inserting is fine. What about removing elements? In array we were not able to remove elements, right? We were able to replace elements. मैं उस इंडेक्स को खाली नहीं कर पा रहा था, मैं उस इंडेक्स में कोई और एलिमेंट भर दे रहा था, मैं उसको जीरो कर दे रहा था, कुछ कर रहा था, बट आई वाज नॉट एबल टू रिमूव दैट एलिमेंट स्पेसिफिकली. मैं array का साइज कम नहीं कर पा रहा था. बट हियर इंस्टेड you can remove elements also. Let's say I am removing 3. So minus let's say is for removing. अगर मैं 3 को remove करूंगा, it will be 2 comma 5. Let's say I am inserting 6, it will be 2 comma 5 comma 6. Let's say I am removing 2, it will be 5 comma 6. मैंने 2 remove किया, then I have 5 comma 6. Let's say I insert 5 again, I will be having just 5 comma 6. Let's say I remove 5, then I will be having just 6. Now you guys would be having a question. Hey, you are having two fives, one five here, one five here. Now you are removing one five. Then only one five should be removed, right? Means you are having two five, one here, but you are removing one five here. Then you should have only one five left. You are not having any five here. Why? As I told you before, the set will contain all elements only once. If I inserted 5 here, and I will insert 5 here, I will insert 5 two times. But in my set, I will be only having only one time. So I'm only having 5 as one time. So when I remove this 5, so this 5 will be removed. It does not depend how many times I've inserted 5 again before. But if I insert 5 here again, it will be inserted. No issues. Now insert is clear. You can insert each element in this method. A dot insert. In Java you'll be having specific method, but here in C++ you can insert with the help of A dot insert comma value. So let's talk about that only. Methods insert. Methods insert. First is insert. I am considering this in teacher set only with the name st. So when I'm inserting, how do I insert? Code is simple. St dot insert val. So whatever value you want to insert, you can insert in this way. St dot insert val. Like I want to insert 2, 3. So a dot insert 3, a dot insert 5, so on. Okay. Now let's talk about erase or remove. So we are having erase as a method here. एज यू सीन कि हम लोग एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं इस डायग्राम से, कि मैंने 3 रिमूव कर दिया, मैंने 5 रिमूव कर दिया. सो हाउ डू वी इरेज और रिमूव इन टर्म्स ऑफ कोड? सो वी हैव अ फंक्शन मेथड नेम एज इरेज. सो st डॉट इरेज वैल. लेट्स से जैसे मैंने जब व्हेन आई इंसर्टेड दीज एलिमेंट्स 3 5 12 सो मेरे पास सेट के अंदर होंगे. आई विल हैविंग दीज एलिमेंट्स इन द सेट. फाइनली let's say now I want to erase 12. So if I do a dot erase 12, so 12 erase हो जाएगा सेट से. Now I'll be left with only 2 3 5 9 18. Let's run this. Let's check. 2 3 5 9 18. ठीक है. Let's insert a dot insert 12. मैंने 12 को इरेज किया और मैंने 12 को वापस इंसर्ट कर दिया, मतलब मेरे पास 12 वापस आ गया. सो प्रोग्राम एक्चुअली रन्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. सो मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 12 को इंसर्ट किया था, 12 को रिमूव, यहाँ पे मैंने 12 को इंसर्ट किया, 12 को रिमूव किया, तो 12 रिमूव हो गया. फिर वापस मैंने 12 को इंसर्ट कर दिया, सो 12 वापस आ गया. लेट्स से मैंने यहाँ पे 12 को 2 बार इंसर्ट किया. लेट्स से a डॉट इंसर्ट 12, लेकिन सेट में एक ही 12 जाएगा, राइट? मैंने 12 को 2 बार इंसर्ट किया, बट स्टिल
यहाँ तक सेट में एक ही 12 रहेगा। 5 2 8 9 18 इंसर्ट किया। अब मैं 12 को इरेज कर रहा हूँ। आई विल इंसर्टेड 12 ट्वाइस, बट इन माई सेट ओनली 12 विल बी इंसर्टेड ओनली वंस। तो जैसे ही इरेज किया वो 12 रिमूव हो गया। माई सेट विल लुक लाइक समथिंग दिस। फिर मैंने 12 को वापस इंसर्ट किया, देन माई सेट विल लुक लाइक समथिंग दिस अगेन। लेट्स रन दिस। सी 2 3 5 9 12 18. Now I hope you guys are clear with this thing. Insert and erase operation. So you can insert and erase like this way. There's one more method known as size. I want to know how many elements are there in the set. So that is called as size. How do we call it? We call this method directly st.size. No parameters passed. If you notice, in insert we were passing a parameter, in erase we were passing a parameter. But here in size we are not passing any parameter. So st.size will automatically tell the size of set. Let's say, let's print the size here. A dot size. यहाँ तक कितने एलिमेंट इंसर्टेड है? यहाँ तक 3 5 12 12. So you guys would say चार एलिमेंट है. So set should have 4 elements, but no, set has only 3 elements, 3 5 and 12. So size आएगा 3. That is 3 5 12. As simple as that. Let's run this code. See, only 3 elements. That is 3 5 and 12. साइज भी क्लियर है, इंसर्ट भी क्लियर है, एंड इरेज भी क्लियर है. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू आस्क एनी डाउट्स, क्योंकि इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दैट वुड बी लिटिल बिट अपर, इससे थोड़ा ऊपर होगा. पूछो, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी के लिए. बोलो, कुछ भी डाउट है तुम लोग को अभी तक सेट में? इंसर्ट कैसे कर रहे, इरेज कैसे कर रहे, साइज कैसे पता कर रहे, इसमें कुछ भी डाउट है? नहीं, राइट? चलो ठीक, ग्रेट. नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग. तुम लोग को नहीं मुझे डाउट है. यू गाइस टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड पॉइंटर. तुम लोग पॉइंटर से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइंटर? बताओ मुझे. जावा में भी सेम है, सी प्लस में भी सेम, सब कुछ सेम है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइंटर कीवर्ड, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइंटर वर्ड? कोई भी किसी को नहीं पता क्या पॉइंटर का मतलब? इट इज okay, it stores the address or it point to the address. What it does, ये एड्रेस स्टोर करता है, फिर जो एड्रेस है उसको पॉइंट करता है. ये होता है मुझे. स्टोर नहीं करता एड्रेस. ग्रेट, सही है. स्टोर ही करता है, मतलब तुम एड्रेस स्टोर करो, मतलब तुम उस एड्रेस को पॉइंट करो, सेम ही चाहिए. बट यू वुड द करेक्ट आंसर इज स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल. एज सिंपल. और मतलब वर्ड से क्लियर. लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंटर वर्ड फर्स्ट, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आए तो फिर जो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ वही समझ में आने नहीं वाला. लेट्स say I'm having a integer variable here, integer x, as simple as that. Let's say x is equal to 8. जितने भी तुम्हारे पास वेरिएबल्स हैं, ऑल द वेरिएबल्स और ऑल द थिंग्स, ऑल द वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड हियर, वो जब प्रोग्राम रन होता है दैट इज स्टोर्ड समवेयर, राइट? दैट इज स्टोर्ड इन योर रैम, and in specific part of a RAM that is called as stack memory. Stack. So अभी के लिए लेट्स नॉट गो इन डीपर इनटू दैट, बट समझते हैं ये तुम्हारा मेमोरी में कहीं स्टोर होगा. सो एक्स वुड बी स्टोर्ड विद द वैल्यू 8. लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस सिंपल दैट. ठीक है. नाउ बट आई वांट टू स्टोर, मतलब हर एक एलिमेंट एक्चुअली, हर एक रैम, रैम इज एक्चुअली अंडरस्टैंड एज अ ब्लॉक ऑफ स्टोरेज.
स्टोरेज के ब्लॉक्स हैं वेयर ईच एलिमेंट इज हैविंग अ एड्रेस समथिंग. हर एक ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस है. लाइक यू गाइस आर हैविंग सम एड्रेसेस ऑफ योर एंड यू आर द वैल्यूज एज सिंपल एज. सो हर एक ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है. लेट्स से इसका एड्रेस है 36, लेट्स से, या कोई भी इसका एड्रेस है. तो इफ आई गो एट दिस एड्रेस देन आई विल गो टू नो अबाउट द वैल्यू स्टोर्ड हियर. यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है वो मुझे मिल जाएगा. सो पॉइंटर इज दैट थिंग ओनली. पॉइंटर ऑफ एनी वेरिएबल स्टोर्स द एड्रेस ऑफ दैट ब्लॉक. जैसे कि इस जगह पे मेरा एक्स स्टोर्ड है. आई वांट टू गेट द एड्रेस ऑफ एक्स. सो पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं? यू राइट जिसका तुम्हें पॉइंटर बनाना है, मुझे एक्स का पॉइंटर बनाना है, मुझे एक्स का एड्रेस स्टोर करना है. सो यू राइट पहले उसका डाटा टाइप, इसका डाटा टाइप है इंट. सो इंट स्टार p. It means that p is a pointer which is going to store address of an integer data type. x integer है तो तुम्हें इसका एड्रेस स्टोर करना है. सो x is an integer, that's an integer here. int star p is equal to x. So this p variable will store the address of x. So p will have 36 है. लेट्स से x यहाँ पे स्टोर था विद वैल्यू 8, तो 36 होगा यहाँ पे. इसका एड्रेस 36 है तो p के पास वैल्यू होगी 36. When you will do c out p, you will get as 36. When you will do c out p, you will get 36. Let's see here. समझते हैं, आप भी देखते हैं थोड़ा सा. Let's comment all these things. Let's have int x is equal to 8. ये मेमोरी में कहीं ना कहीं एड्रेस स्टोर होगा. और मेमोरी में हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है. आई वांट टू नो द एड्रेस. सो int स्टार p, कहीं भी कर लो, यहाँ लगा लो, int स्टार p is equal to x. सो लेट्स सी, सी आउट p मतलब x का एड्रेस, इसका वैल्यू होगा x. Let's see. Now let's see what is the address of x. Invalid. Did I did something? Yeah. One second, guys. हाँ, दिस इज हाउ वी स्टोर द एड्रेस. हम ऐसे स्टोर नहीं करते. जिसका भी मुझे एड्रेस स्टोर करना है, यूज दिस m%x. मुझे x का स्टोर करना है तो m%x. नाउ दिस p is having address of x. See, this is address here. ये एड्रेस है. इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है? x का वैल्यू है, दैट इज 8. लेकिन तुम किसी एड्रेस से भी उसका वैल्यू पता कर सकते हो, राइट? अगर सपोज मैं किसी एड्रेस पे चला गया, सपोज मैं तुम लोग के किसी भी एड्रेस पे चला गया, लेट्स से आई गो टू आशीष एड्रेस, देन इट्स ऑब्वियस दैट आई विल गेट आशीष देयर. सो हाउ डू वी get the value from address? Like p is having address, so I can get the value by doing this. This is a specific term. I don't remember this term. क्या बोलते हैं इसको? But हाँ. So whenever you put a star here, so p is having address of x. Star p will tell the value of x. So let's see. Hmm. हाँ, सी p एड्रेस शो कर रहा था तो ये एड्रेस आ गया, x यहाँ पे आ गया और ये आ गया 8. नाउ अब तुमसे, अब मेरा सवाल तुमसे ये है, लेट्स से इफ आई डू x इज इक्वल टू 9. अब मैंने x इज इक्वल टू 9 यहाँ पे चेंज कर दिया एंड लेट्स से आई प्रिंट स्टार p. सो तुम लोग मुझे बताओ स्टार p का वैल्यू क्या होगा? विल इट बी 8? विल इट बी 9? बताओ, 8 होगा 9 होगा? ये बताओ मुझे पहले. आई नो दिस इज गोइंग ऑफ टॉपिक, हम सेट पढ़े थे और मैं कहाँ गया, बट इसका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. ये बताओ जल्दी बताओ, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ स्टार p? विल इट बी 8 और विल इट बी 9? आई से 9. लेट्स सी. 9 है. क्यों 9? भाई तुम्हारा वैल्यू का एड्रेस कभी नहीं होता.
तुम्हारा वैल्यू का कभी एड्रेस नहीं होता, तुम्हारा वेरिएबल का एड्रेस होता है। सो एक्स का एड्रेस ये था, 36। तुम यहाँ पे 8 रखो, अभी तुम बाद में 9 रखो, डज नॉट मैटर। एंड पी इज हैविंग एड्रेस ऑफ एक्स, इज नॉट हैविंग एड्रेस ऑफ 8। सो अगर तुमने बाद में एक्स का वैल्यू चेंज कर दिया, सो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, लेट से आशीष ने अपना घर किसी को बेच दिया एंड उस घर में कोई और रह रहा है, देन मैं उसी एड्रेस पे आऊंगा, तो जो नया बंदा रह रहा है मुझे वो मिलेगा। आई वोंट गेट आशीष देयर, बिकॉज दैट एड्रेस बिलोंग टू समवन एल्स नाउ। वैल्यू चेंज हुआ है उसका, लेकिन एड्रेस वही है। नाउ अनदर क्वेश्चन, let's say int y is equal to x and I have another pointer int star p2 is equal to and y. Now let me ask you one thing. ये बताओ मुझे, क्या ये p2 और p क्या दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट करेंगे? मैंने एक y वेरिएबल बनाया दैट इज इक्वल टू x। नाउ आई एम डूइंग int star p2 is equal to and y। मैंने x की इक्वल कर दिया y को, क्या दोनों का एड्रेस सेम होगा? व्हाट आई एम आस्किंग कि p और p2 का एड्रेस क्या सेम होगा? It means that P and P2 will point to same memory block। बताओ मुझे इसके बारे में, बताओ थोड़ा सा। हाउ मेनी ऑफ से यस, वो लोग बताओ, जिनको यस लगता है वो लोग हैंड रेस करो। आशीष, सलवा, बिंदा, दिव्या, क्या लगता है तुम लोग को? पी और पी टू का सेम एड्रेस होगा, मतलब पी और पी टू दोनों सेम ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे होंगे? क्या बोलते हो? हाँ या ना तो बोलो यार, बोल दो नहीं पता। क्या बोला किसी ने अभी? डिफरेंट। भाई लेकिन भाई तो एक्स के बराबर है। एग्जैक्टली, P and P2 will have a different value here. So if I print C out P and P2, if you notice दोनों का different address होगा। Let's run this code again. See, both are having different addresses. Two different addresses because values are copied. दो आइडेंटिकल घर का एड्रेस सेम जरूरी नहीं सेम है, ऐसे सिंपल सा। यहाँ पे y में जो वैल्यू है दैट इज हैविंग द सेम वैल्यू एज x। जिससे कि अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे करूँ 6 या 7, तो y की वैल्यू थोड़ी चेंज होगा। y का वैल्यू जो पहले तो वो होगा, राइट? आई गेस इतना क्लियर है। सो दैट इज ऑल अबाउट पॉइंटर्स। आई डोंट वांट टू इन्वेस्टिगेट मोर अबाउट दिस, थोड़ा समझाना था मुझे इस पे बस। नाउ these pointers are specific to what you say, specific to normal data structures like integer, character and all. One more thing, let's say I'm having a character c is equal to, let's say question mark, और मुझे इसका एड्रेस स्टोर करना है। सो int star p is equal to and c, how many of you say this is correct? ये कोड करेक्ट है। In this way p will point to c, how many of you say कि this code is correct? No, this code is not correct। जिसका भी तुम्हें पॉइंटर स्टोर करना है, जिसका भी तुम्हें एड्रेस स्टोर करना है, you have to write उसका डाटा स्ट्रक्चर here। I want to store address of C, so I would write the character, I would write the data structure here। Data type is character, so char star P is equal to NC। This data type of pointer tells कि तुम किसका एड्रेस स्टोर कर रहे हो, जिसका एड्रेस स्टोर कर रहे हो उसका डाटा टाइप इधर आता है। ठीक है, इतना काफ़ी है, अभी इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करते। ओके, पॉइंटर वॉज फॉर नॉर्मल डाटा स्ट्रक्चर्स, नॉर्मल डाटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर, सब हुआ, इनके लिए था। बट सेट इज नॉट अ नॉर्मल डाटा स्ट्रक्चर। जो हमने अभी सेट बनाया है, इट इज नॉट अ नॉर्मल डाटा स्ट्रक्चर, इट इज समथिंग एल्स। ये हमें एसटीएल कंटेनर प्रोवाइड कर रहा है। सो वी डोंट हैव पॉइंटर्स हियर। ओके, वी आर हैविंग समथिंग एल्स दैट इज कॉल्ड एज आइटरेटर्स। वी आर हैविंग समथिंग एल्स दैट इज कॉल्ड एज आइटरेटर। आइटरेटर होता है यहाँ पे क्योंकि ये एक क्लास है। दिस इज अ क्लास, सेट एक एसटीएल क्लास है और ये इम्प्लीमेंटेड है इंटरनली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो यू डोंट हैव एनी पॉइंटर्स हियर, ये वो आइटरेटर्स हियर, और ये भी सेट क्लास प्रोवाइड करता है। नाउ
Before moving forward, let me ask you one thing. Let's say I'm having a set 3, comma 6, comma 12, comma 15, comma 19. This is a set, okay? And I want to access second element. How do I access second element? Store erase करना is a different thing, but I want to access those elements also. How do I access second element? Will A1 work? क्या A1 वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा. As I told you, सेट लीनियरली स्टोर तो करता है, बट इंटरनली कुछ डिफरेंट डायरेक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन. You cannot access the elements on the basis of their indexes or their positioning. ऐसे हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनली अलग तरीके से एक्सेस करते हैं. दैट्स वाई आइटरेटर्स कम इनटू पिक्चर. आइटरेटर्स पिक्चर में आते हैं. नाउ अभी समझेंगे, जैसे समझेंगे अपना समझा देगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द सेट सम मोर मेथड्स. अभी समझा देगा सब कुछ अपना. बी विथ मी. अभी हमने पढ़ा इंसर्ट, हमने पढ़ा इरेज, हमने पढ़ा size. Let's talk about some more methods. This new method that we are going to talk is called as find. वर्ड से क्लियर है कि किसी को तुम्हें फाइंड करना है. ओके, सिंटेक्स इज एस टी डॉट फाइंड वैल. कि तुम्हें सेट में वो वैल्यू फाइंड करना है. यू वांट टू फाइंड दैट वैल्यू इन सेट. लेट्स से सेट इज 3, 5, 12, 19, 34. Now I want to find some value. Let's say I want to find st dot find 19. So what this method will return? This method will return address of 19. 19 का एड्रेस देगा मुझे. इट विल रिटर्न एन एड्रेस और इट विल रिटर्न अ वेरिएबल दैट विल पॉइंट टू दिस. एक पॉइंटर की तरह यू कैन अंडरस्टैंड पॉइंटर रिटर्न करेगा. बट इन माई वर्ड्स ये एड्रेस रिटर्न करेगा. तुम्हें 19 का एड्रेस मिल गया और तुम्हें उसका वैल्यू निकालना है. सिंपल, स्टार एड्रेस. बट एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आइटरेटर्स होते हैं, पॉइंटर्स नहीं होते. सो एस टी डॉट फाइंड will return an iterator. Iterator is same thing as a pointer. बिल्कुल पॉइंटर की तरह है. So st.find will return an iterator of 19. So you will have an iterator here. Let's say it. So it will point to 19. And how do I get the value at this address? So star it will be 19. Star it will be 19. Let's understand this with the help of code. Let's say I'm having a set here. Set int a is equal to 3, 5, 16, 19, 25, let's say. And let's say I want to find address of 19. So a dot find will give me the address. ये मुझे एड्रेस मिल गया, ठीक है. अब मैं इसका वैल्यू कैसे पता करूँ? अभी तुम लोग को मैंने सिखाया था पॉइंटर में. हाउ डू यू गेट द वैल्यू? बाय पुटिंग अ स्टार वर्ड हियर बिफोर दैट एड्रेस. तुमने एड्रेस के सामने स्टार लगाया. दिस स्टार इज कॉल्ड एज डी रेफरेंसिंग. तुमने उसको डी रेफरेंस किया. यहाँ पे वैल्यू क्या तुमने वो पता किया. सो ए डॉट फाइंड, इससे मुझे एड्रेस मिल गया. एंड पुटिंग स्टार आई विल गेट द वैल्यू एट दिस एड्रेस. उस एड्रेस पे 19 है, सो आई विल गेट 19 हियर. लेट्स रन दिस कमांड एंड यू शुड गेट 19. ए डज नॉट नेम अ टाइप है भाई. ये तो 19 हियर. बट some questions can come into your mind. कि let's say if I print cout star a dot find 18, let's say 18 is not in the set. Someone is saying something here. Please share the recording, help us to revise the topics. Fine here. See, a dot find 18. 18 is not in the set. Then what you will get here?
सो 18 सेट में है ही नहीं तो तुम्हें उसका एड्रेस मिलेगा ही नहीं. तुम्हें क्या मिलेगा? यू विल गेट सम गार्बेज वैल्यू और यू विल गेट सम रन टाइम एरर, बट गार्बेज आएगा. सी, यू गॉट 5, some garbage value. If I run it again, I should get different value, but I don't know. But garbage actually, this is garbage value. This does not make any sense. So समझते हैं what is actually happening. So st dot find value. अगर ये value है, if this value is present in the set, it will return the iterator of that. अगर ये value नहीं है, if this value is not in the set, like here, 18 was not here, then it will return an iterator that is called as st dot end. It will return an iterator that is called as st.end. Let's print this value. Let's print this value. Cout star a.end. Let's print this value. See, 18 नहीं था, so it should return. इसको मैं कुछ और करता हूँ भाई, तुम लोग कंफ्यूज होगे. See, 18 set में नहीं था, right? So this should return an iterator called as st.end और a.end here. So मैंने a.end पे जो वैल्यू है वो पता किया, that is 5, और ये भी a डॉट एंड रिटर्न करेगा क्योंकि अपने पास 18 है नहीं. सो दैट वैल्यू इज आल्सो 5. सो इट मींस दैट आई एम करेक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज आइटरेटर्स. व्हाट इज st डॉट एंड एंड वेयर डज इट पॉइंट, क्योंकि हर एक पॉइंटर कहीं ना कहीं पॉइंट करता है. सेम गोज विद आइटरेटर, हर एक आइटरेटर कहीं ना कहीं पॉइंट करेगा. सो वेयर डज इट पॉइंट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो set you are having set. So there are basically four default iterators. You will understand the meaning of default iterators very soon. Be with me. One is st.begin. So st.begin is iterator of the first element. Okay. Another is st.end, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था. st.end is iterator after the last element. 25 is the last element, so st.end is iterator of the after the last element. So this is here. It is pointing to some garbage value. You can see it. Now, I told you there are four default iterators. So these are the two. What about other two? So other two are st dot r begin. यहाँ पे st dot begin था, यहाँ पे st dot r begin. It will point to last element. There is another iterator known as st dot r end. st dot r end. It will point to an element before the first element. First element was 3, so st dot r end will point to this element. अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, कंफ्यूजिंग लग रहा हो, क्या बोल रहा हूँ मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, बट समझो. देयर आर फोर डिफॉल्ट आइडेंटिटीज नेम एज st डॉट begin. सो अगर मैं st डॉट begin करूँ यहाँ पे, इफ आई कमेंट दिस थिंग, लेट मी प्रिंट cout star st डॉट begin. This will give me first value. If I do cout star st dot r begin, it will give me last value. If I do cout star st dot end, it will give me element next to last value. So that's some garbage value. Cout st dot r end. It will give me element before the first value. So some garbage value here. Let's run this. Something with my code. Uh, okay, my bad. It's not A, it's ST.
हाँ सी, एस टी डॉट बिगिन पॉइंट टू फर्स्ट एलिमेंट, स्टार लगाया तो वैल्यू आ गया। ओके, एस टी डॉट आर बिगिन पॉइंट टू लास्ट एलिमेंट, स्टार लगाया तो वैल्यू आ गया 25। एंड यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू, गार्बेज दोनों का 5 5 दे दिया इसने, ठीक है। ओके, नाउ जस्ट वन क्वेश्चन टू यू गाइस, एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास एक सेट है, ठीक है। इसमें तुम्हें किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट दे दिया, जैसे तुम्हें दिया 6, तुम्हें दिया 2, तुम्हें दिया फिर लेट्स से 5, तुम्हें दिया फिर लेट्स से 16, तुम्हें दिया लेट्स से फिर 1। तो यू डोंट नो द ऑर्डरिंग, और तुमसे कोई फाइनली पूछे कि टेल मी द मिनिमम वैल्यू, टेल मी द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सेट, व्हाट एंड हाउ विल यू टेल, बताओ मुझे। सेट में इंसर्ट करना तो वो कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है किसी भी मोमेंट पे, लेट्स से मैंने अभी 6 इंसर्ट किया, मैं पूछूं भाई अभी बताओ स्मॉलेस्ट क्या है। लेट्स से फिर मैंने 2 इंसर्ट किया, फिर पूछा स्मॉलेस्ट क्या है। जैसे मैंने 5 और 6 इंसर्ट किया, फिर मैंने पूछा बताओ स्मॉलेस्ट क्या है, हाउ विल यू टेल, बताओ मुझे। जब मैंने 6 इंसर्ट किया, बताओ, हाँ कोई बोल रहा था कुछ, हाउ विल यू टेल स्मॉलेस्ट एंड सिमिलरली लार्जेस्ट। एग्जैक्टली। एंड हाउ डू एक्सेस फर्स्ट एलिमेंट, हाउ डू एक्सेस फर्स्ट एलिमेंट। ओके, ग्रेट। आई गेस तुम लोगों को चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सेट में असेंडिंग ऑर्डर एलिमेंट स्टोर होता है। सो एस टी डॉट बिगिन विल गिव यू द फर्स्ट एलिमेंट आइटरेटर, एस टी डॉट बिगिन विल गिव यू द लास्ट एलिमेंट, ऐसे सिंपल सा तुम एक्सेस कर सकते हो। तो ठीक है, सेट में इतना ही, लिटरली इतना ही। एंड देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टॉट टू, लेट मी आस्क यू अ ट्रिक क्वेश्चन। लेट्स सी योर सेट इज हैविंग 1 6 2 5। सो अगर मैंने से मतलब सेट के अंदर इट इज इन दिस फॉर्मेट। ओके, मैंने ऐसे लिखा है, बट सेट विल हैव इन दिस फॉर्मेट। नाउ जस्ट वन क्वेश्चन टू यू गाइस, इफ आई डू st dot erase 3, what will happen? If I do st dot erase 3, what will happen? 3 तो सेट के अंदर है नहीं, what will happen with st dot erase? बताओ क्या होगा। नथिंग विल हैपन, बट समटाइम्स 3 है नहीं तो erase तो नहीं होना चाहिए, बट स्टिल समटाइम्स यू माइट गेट रन टाइम एरर, ठीक है। सो देयर इज अनदर वे ऑफ इरेजिंग एलिमेंट, एक आदमी दूसरा तरीका है इरेज करने का एलिमेंट, known as st dot erase iterator. Let's say you're let's say you are having in a set 1 2 9 16 30, अब तुम्हारे पास एक आइटरेटर है that points to 9, let's say. So if you do st dot erase it, this 9 will be removed. This is another way of removing element. तो आपस अगर किसी का आइटरेटर है, इसका मतलब तुम्हारे पास वो एलिमेंट वैलिड है, एज सिंपल एज, ठीक है। अब मैं बहुत देर से आइटरेटर बोल रहा हूँ, बट नाउ यू गाइस वुड बी आस्किंग कि हाउ डू यू राइट आइटरेटर। यू आर ऑलवेज प्रिंटिंग अ वैल्यू, राइट, यू आर ऑलवेज प्रिंटिंग अ वैल्यू हियर, स्टार एस डॉट वीकेंड, तुम आइटरेटर लिख ही नहीं रहे। लाइक हम पॉइंटर लिखते हैं इंट स्टार पी, कैर स्टार पी, जो भी है। तो यहाँ पे कैसे एक वेरिएबल बना आइटरेटर का, लेट मी टेल यू, इट इज वेरी वेरी बिग वर्ड, राइट। आइटरेटर का जो वेरिएबल का डाटा टाइप है, इट इज समथिंग लाइक आइटरेटर, आई डोंट नो, सेट इंट, समथिंग लाइक दिस, बहुत बड़ा वर्ड है इसका। और तुम ऐसे करके आई टी इज इक्वल टू ऐसे लिखते हो, समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा कुछ है। बट टू avoid any spelling mistake or to avoid confusion, we are having a auto keyword here. Auto, auto x is equal to कुछ भी कर दो 5, let's say I did auto x is equal to 5. So this auto will automatically take the data type here.
यहाँ पे 5 इंटीजर है, सो दिस विल बी int x. If I do auto y is equal to, now this 5 is a character, so y will be character here. Auto will be character here. But now if I do this, auto it is equal to st dot begin. As I told you, st dot begin is an iterator. So this it will be also iterator here. So this auto will be iterator here. So तुम्हें बड़ा सा सिंटेक्स याद नहीं करना, जस्ट राइट ऑटो इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, ऐसे बस है. ऑटो इज इक्वल टू st dot begin मैंने लिख दिया, समझ में आ गया मुझे. ठीक है. ठीक है, इरेज करना आ गया, इंसर्ट करने आ गया, एलिमेंट फाइंड करना आ गया, और एलिमेंट एलिमेंट अगर नहीं है तो पता करना कि एलिमेंट है कि नहीं है. बट नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ डू यू आइटरेट और हाउ डू यू हैव अ लूप ओवर सेट. लाइक हमारे पास एरेज में हम लोग को पता है इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स वो है, बट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स इन सेट हियर. लेट्स से आई एम हैविंग अ सेट हियर, समथिंग लाइक दिस, 1 2 9 18 6 19 25. I don't have any index concept here. Then how do I iterate over this set? So one method is, you start iterator from here and you do it plus plus and move to next iterator. Let's say my iterator is here. Let's say auto it is equal to st dot begin. My iterator is here. I will just write the code here, as simple as that. समझ आ जाएगा तुम्हें सही. uh, Let me comment this thing here. Okay, मुझे इस पे आइटरेट करना है, राइट. आई वांट टू लूप ओवर दिस सेट, सो आई कैन यूज फॉर लूप फॉर ऑटो it इज इक्वल टू st डॉट बिगिन. मैं फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा. जैसे ही मेरा लास्ट एलिमेंट होगा, दैट लास्ट एलिमेंट मतलब खत्म हो जाएगा, आई विल नॉट गो टिल द लास्ट एंड आई विल डू it प्लस प्लस. समझना. इनिशियली माई आइटरेटर इज हियर. Okay, at 3 I am doing some operation, I will do it plus plus. Now this iterator will move to next element. Now this iterator will move to next element, next element, next element. Now when you do again it plus plus, your it is at element next to next element, element next to last element. That is st dot end. और a condition meet कर गया, it means you will break out of the loop. Let's see whether it works or not. See out. It is iterator. I want to know the value. Star it. Let's run this. I should have a 3, 6, 16, 19, 25. So on. See, print कर लिया. But after C++ 20, there is another way of writing also. That is for auto v st. ऐसे भी आइटरेट कर सकते हो. ये क्या करेगा? दिस मीन्स दैट तुम st के सारे वैल्यूज पे जाओ. नाउ हियर v इज इंटीजर हियर. यहाँ पे v आइटरेटर नहीं है, v इज अ वैल्यू. v is a value here. So cout v space cout इंडल करते हैं. Let's see what are the output of both the commands. See, ऊपर वाले से भी आया, नीचे वाले से भी आया. This is a new format here which you can do. Here v is a value. v वैल्यू है कि इस पोजीशन पे क्या वैल्यू है. हो गया. फिर अगले पोजीशन पे सॉल्व. It will move to each position and will print the value at each position. This is all about set, knowing about set basically in theory. अभी हम लोग सेट पे कल प्रॉब्लम करेंगे, एंड टुमारो वी विल डू सम प्रॉब्लम्स एंड वी विल फास्ट फॉरवर्ड. ठीक है. दैट इज ऑल अबाउट सेट. हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग सेट फॉर द फर्स्ट टाइम? हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग सेट फॉर द फर्स्ट टाइम? सब लोग को पता था क्या पहले से? ठीक है. बट स्टिल आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अभी तक सेट में किसी को कुछ भी डाउट है? बताओ. सेट में किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो. इफ नॉट, then we can discuss something else, other topic also.
सेट में किसी को कुछ भी डाउट नहीं है. चलो ठीक है. So that's all about today's class. And I will share the recording by today or tomorrow.